Waiting for others to join, Srishti. We'll start once other people have joined. Okay. Meanwhile, you wanted to ask anything about your resume? Yeah, actually, I was creating my resume yesterday, and I was creating with Kumail. So he said I just have 2 years of experience because for Concentrix, I think I cannot show Azure, right? Why not? Concentrix has Azure too. What is your total? Could you send a copy of your resume to me, whatever it is, or whatever you Yeah, have yeah. created? Share it with me, and I'll let you know then. Okay. So I'm not editing the Concentrix one, but the other one I'll edit it out and send it to you after this class. Okay, that's fine. You guys, did you also have any questions with relate to your resume? यस सुहेल भाई, आपने देखा? हाँ, looks good मैंने to आपको me. भेजा तो Mm-hmm. मुझे थोड़ा वो अ, ज्यादा ही उसमें पॉइंट्स लग रहे हैं कि ऐसा कम कोई कर दो, इश्यू कोई तो नहीं होगा ना किसी इंटरव्यू में? किसी पॉइंट्स पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है थोड़ा सा, सो कम कर दो उसको, कोई हम्म। ऐसा इशू नहीं है. हाँ, बट दिस ओके। दिस इज फॉर श्योर दैट जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, एटलीस्ट उस पे बोलना आना चाहिए. वही। सो चलेगा। विच पॉइंट इज देयर जस्ट जो लग रहा है ऐसे कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया या ये नहीं बोल पाऊंगा, विच पॉइंट इज डू यू थिंक? अभी देखना पड़ेगा, वैसे कुछ पॉइंट्स तो है। फॉर एग्जांपल वो पैशन का रिलेटेड था, हम्म. और बाकी आई थिंक देखना पड़ेगा रिज्यूम, बहुत सारे भाषण तो पॉइंट्स हम थे। करेंगे ही वैसे भी. हाँ, और कौन से हैं? मैं देखता हूँ एक मिनट। सृष्टि, व्हाट अबाउट यू? Sohail, यस. the migration point जो उसमें mention था. So wouldn't they ask you like how you're like doing so much of migration in such early like in such less experience? सो दैट्स ओके. आई मीन माइग्रेशन मिल जाता है. माइग्रेशन इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है जो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को दिया जाएगा. माइग्रेशन प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड माइग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग. माइग्रेशन Okay. इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक माइग्रेशन इज? माइग्रेशन में कुछ नहीं होता है. माइग्रेशन इज मूविंग योर सर्वर्स फ्रॉम योर ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड. सो मूविंग मतलब लिटरली उनको मूव नहीं किया जाता, एक तरह की नई मशीन ही बनती है क्लाउड पे. So when it comes to migration, it will be similar: creating a VLAN, creating a subnet, creating a VNet, creating a machine, connecting to VLANs. जो आपका on premises वाला ये है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उठा के आप क्लाउड पे कर देते हो. तो अल्टीमेटली आता Okay. वही है जो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इतने दिन से जो हम करते आ रहे हैं कि स्टोरेज है, Mm-hmm. VNets है. इसके अलावा माइग्रेशन कोई अलग से बहुत बड़ा टास्क नहीं है. So इफ Okay. इट इज will अ be न्यू. question. So हाँ भाई. Swed, माइग्रेशन में हम लैंडिंग जोन पे काम करते हैं क्या, या फिर सब मतलब हर स्टेप जैसे डिस्कवरी हो गया, रेप्लिकेशन हो गया एंड देन माइग्रेशन हो गया, हर स्टेप हम करते हैं या फिर हम सिर्फ लैंडिंग जोन, इफ वी से इन इंटरव्यू? नहीं, लैंडिंग जोन अपने आप में एक लैंडिंग जोन की अलग से टीम होती है. नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को कितना बोलना है और क्या बोलना है. इन दिस सेशन, नॉट टुडे बट इन दिस ट्रेनिंग, वी विल कवर माइग्रेशन फ्रॉम एंड टू एंड. व्हाट आर्किटेक्ट्स डू, वी विल कवर दैट आल्सो, कि किस तरह के क्वेश्चनर्स उठाए जाते हैं, किस तरह से डिटेल होती है. विल कवर दैट आल्सो. We will cover the migration also. We'll cover discovery. We will cover landing zone. We will cover the strategies of migration. These are the 6 R's of migration. What is rehosting, replatform, repurchasing? What are those? We will cover this. किस तरह से tool वगैरह होता है? We will cover everything in migration. Hence, these were the sessions I was asking you guys to take offline. It is easier to understand. Migration is a tricky topic and most important. So in this training, we will cover end-to-end migration. Now, however you understand, whatever you understand and remember, mention that in your project. Obviously, do not mention assessment. You will not do the assessment. You will have architecture team will do the assessment. When it comes to assessment, this is just a sample. See, these are the questions we ask to them.
कि business as in application we are talking about. Please provide the application or service name, उसका business nature कैसा है. The bold में जो कर रखे मैंने important questions है. Are there any application, middleware, database or operating system licenses agreement which will prevent for the deployment to Azure? मतलब एग्जांपल के लिए मैंने डेल का हार्डवेयर खरीदा था, ठीक है, एंड उसने मुझको डिस्काउंट दिया था दैट फॉर 3 years आई विल रन दैट हार्डवेयर विथ देम, और उसमें उनसे मैं उनकी सर्विसेज लूंगा फॉर 3 years. तो आई एम इनटू अ लीगल एग्रीमेंट विथ डेल, एंड इफ आई डोंट डू दैट मे बी आई हैव टू पे सम एक्स्ट्रा. इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो सकता है, या कोई मिडलवेयर हो सकता है, कोई डेटाबेस, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है जो सिर्फ उस डेल के हार्डवेयर के साथ चलेगा. एंड नाउ इफ वी मूव, तो वो वाला उसमें नहीं चलेगा. एंड देन डेल या जिससे भी हमने ले रखा है, दे विल नॉट सपोर्ट ऑन क्लाउड बिकॉज यू हैव यू आर इन एन एग्रीमेंट विद देम कि आपको एटलीस्ट 3 साल हमारे साथ चलाना था, राइट. तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट है क्या जो क्लाउड पे मूवमेंट से हम लोगों को प्रिवेंट कर रहा है? सो दीज इश्यूज यू विल नॉट बी डिस्कसिंग एट योर एंड, दो आई विल शो यू एवरीथिंग. यू शुड नो कि बैकग्राउंड में होता क्या है, क्या क्या चेक्स होता है, किस तरह से होता है. what you can say is whatever when we come to portal, उसके बाद जितने टास्क हम करने वाले हैं उसमें से आप 4-5 टास्क उठा के बोल दो कि हाँ यार हमारे पास ये आता था, creating virtual machines और maybe creating VLAN और connecting VLANs, VNet peering, ये सब हमारे पास आता था. That's what you can say. Is it clear? ठीक है। और ये वैन भी हमारे सिलेबस का पार्ट है क्या? WAN is virtual area network, wide area network, sorry. So what do you exactly mean by WAN? हमारे इसका virtual WAN are you talking about? या उसमें VWAN? नहीं, जिसमें वीनेट पेयरिंग वगैरह सब एक साथ हो जाता है उसमें. हाँ, that is VWAN. More than VWAN, we have a hub and spoke network. So we will do hub and spoke. VWAN में मत पढ़ो. VWAN बहुत in depth वाला deployment वाला ये है. So you can simply say कि VWAN पे हम लोगों ने काम नहीं किया है. उसी तरह से एक और concept है hub and spoke model. That we will do. So this is the way. See, whenever it comes to an assessment of an application for the moment to cloud, ये सारे चीजें जो है framework we follow. इतने सारे questionnaires वगैरह हम लोग डिटेल में लेते हैं, जैसे कि कौन से पोर्ट्स इंपैक्टेड है, क्या क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है. बट ऑल दीज थिंग्स विल बी व्हाट इज आरटीओ, आरपीओ, ये सारी चीजें जो है हम डज द एप्लीकेशन यूजिंग डेटाबेस, इफ यस व्हिच टाइप ऑफ डेटाबेस. हमको ये पता होना चाहिए कि वो डेटाबेस जाके क्लाउड में मैच करेगा या नहीं करेगा. अगर नहीं करेगा तो उसका इक्विवेलेंस कौन सा है, अगर है तो फिर उसके चार्जेस कितने हैं, वो सारी चीजें क्लाइंट को देनी पड़ती है. सो इट इज अ लेंथी प्रोसेस. आर देयर एनी डीएमजी सर्वर्स? डीएमजी मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन, एक सर्वर्स होता है, एक जिसमें पब्लिक आईपी लगता है. एक कोई डीएनएस एंट्रीज है क्या? तो ये एक लंबा क्वेश्चन और एक लंबा प्रोसेस होता है. सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस. यू कैन सिंपली से कि ये काम हमारी आर्किटेक्चर टीम करती थी एंड दिस इज व्हाट वी डू. ये जो है काम आपका आर्किटेक्ट टीम ही करेगा हमेशा. अगर ये भी काम आप कर रहे हो तो देन यू विल नॉट नीड एन आर्किटेक्ट टीम. ठीक है. सो यू कैन सिंपल डिपेंडेंसी, बहुत सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर डिपेंडेंसी होता है. माइग्रेशन ग्रुप इसके ऊपर डिसाइडेड होता है. लेट्स से दैट आई हैव अ सर्वर, एन एप्लीकेशन सर्वर, उसकी डिपेंडेंसी 2 और सर्वर्स के साथ है. सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इन तीनों को साथ में माइग्रेट करूं. अदरवाइज एक वहां चला जाएगा, 2 यहाँ पर रहेंगे, वो एक भी नहीं चलेगा और ये 2 भी नहीं चलेंगे. बट ऑल दीज फैक्टर्स एंड असेसमेंट एंड डिसीजन, ये सब आपके लेवल पे नहीं आएगा. सो यू कैन सिंपली डिनाई. आई विल शो इट टू यू. ठीक है, मैं पूरा माइग्रेशन करके भी बताऊंगा आप लोगों को. बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि इसमें स्पाइक कब होता है, यूजेज का पैटर्न क्या है, ये सब में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग. गाइस गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज. सो आई वाज सेइंग कि आप लोगों को इस सब में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू were you facing some background noise? Were you hearing some background noise? No. Okay, fine. I thought there was. I had to change something. So I was saying, you guys don't have to worry about this. I will explain it to you, and once you know it, then we will do the migration, actual migration on portal. There you have to focus because that you will have to portray as your work. When it comes to portal, how do we start on portal? When it comes to assessment, whenever it is there for the assessment for this one, or be it this one, right? Or anything, whenever it is about assessment, you can
quote few words or few sentences, or you can say, okay, I know how it works, I know what our architecture team does, but I'm not aware of it. I don't do that, right? I'm not applying for the architect. I mean, not literally in this tone, however you want to say it. So you can say few things that I know, but that is not my part of job, or I don't do that. See, this is the way we take the complete assessment. All these three documents is an assessment of one server, just one server. So now imagine if you have multiple application, multiple server, how it works, how will it go. वहां पे ये सब इस तरह के डायग्राम हम लोगों को बनाकर देना पड़ता. What you will get ultimately is a diagram similar to this with description, जिसमें ये होगा कि you will have to go to portal. मतलब नॉट लिटरली ऐसे नर्सरी टाइप में इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, राइट? टेक्निकल होता है वो भी थोड़ा सा, बट इंटरव्यू में कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकता आपसे कि वो किस तरह से टेक्निकल आपको पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. सो यू विल गो टू पोर्टल, create a migration project, create a migration project. So you guys will have to come here, create a project. This we will see कि कैसे होता है exactly, सब कुछ कैसे होगा, this we will see. इतना आप लोगों को याद रखना होगा कि ये पोर्टल के बाद आने के बाद जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, this you guys will have to remember. Is it clear that what are we migrating database? Are we migrating servers? Are we migrating machines? So let's say servers. Here I already have a project. I think I have multiple projects here. Temporary projects when I say so. So I've created a project. This you should know that okay, there is a project. This you should know that for discovery we use Azure Migrate Discovery and Assessment tool. For migration we use Azure Migration and Modernization tool. ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, and you should use these terms. And there are plenty of what do you say, migration tools, but these are Azure specific or these are from Microsoft. यहाँ पर बहुत सारे independent service provider भी है, like this. Carbonite बहुत famous है, but you can say that's okay, we are not using Carbonite. Current, I'm currently working on the Current. Okay, you can use Current also. I can show it to you how this looks. Okay, then we have this Zerto. Most famous is Carbonite or आप लोग, but you can stick to, because we do not have Carbonite for practice. And Current I do not want to show it to you guys because वो पूरा एक अलग पढ़ाई हो जाएगी. So we will stick to Azure Migrate server migration. You can simply say, ऐसा नहीं कि Azure Migrate इसको कोई यूज नहीं करता, इसको भी काफी लोग यूज करते हैं, ये इनबिल्ट है. So we will stick with these two tools: the how to discover, how to check dependency analysis, how to assess, what is the overview. Once it is done, how to discover machines, then how to start replication, then how to migrate. तो ये पोर्टल में जितनी चीजें हम लोग करने वाले हैं ना, you guys will have to remember those things. Okay, related to this assessment and everything, it's good to know information for you. You guys don't need to know it, don't need to mug it up, और याद रखने की कोई जरूरत नहीं. It's a lengthy process, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा ये होता है. इसमें से काफी चीजें मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, इसको मैंने रीनेमिंग वगैरह कर रखा है. So you guys don't have to remember everything. Is it clear? Yes guys, anyone has any questions? Yes, sir, Baki, I joined a bit late. What was this regarding? Just a question, कोई migration? टॉपिक नहीं, माइग्रेशन टॉपिक नहीं शुरू किया है. अमित हैड अ Okay. क्वेश्चन कि जब माइग्रेशन पे आते हैं तो हम लोगों को क्या क्या बोलना है, डिस्कवरी भी हमको ही बोलना है या क्या करना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वैसे भी जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाने वाले हैं उन सेशंस में, सो आई लेट यू नो कि एग्जैक्टली पूरा काम कितना होता है और आपको अपना ये कितना बताना है कि दिस वाज अंडर मी और बाकी सब टीम जो है मिलके करते थे. तो जब बाकी टीम करती है उसमें आपको कुछ पता है तो बेटर है, बट व्हाट यू आर क्लेमिंग टू बी योर वर्क्स, you need to know that very well. Okay? Oracle migration, ये सब we'll see all of these, but इतना आप लोगों को याद नहीं करना है. What you guys have to remember, जो भी पोर्टल पे हो रहा है वो आप लोगों को याद करना है, because you are presenting yourself as an implementation engineer or a platform engineer. So you should know कि इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है. If I start here, if I create a project, or maybe I already have a project, ठीक है. So I'll simply go ahead and I'll select one project here. Let's say this project. Here, if I want to start, if I click on discovery, what will happen next? I'll have to select that where my machines are coming from. Are they coming from VMware? Are they coming from Hyper-V? Or are they coming from the physical environment or AWS or GCP or anything? ठीक है. Hyper-V को अलग रखा है, vSphere को अलग रखा है, VMware vSphere.
देन फिजिकल और अदर क्लाउड्स, AWS से भी आप माइग्रेट करके ला सकते हो, ठीक है। So let's say that my machines are coming from Hyper-V. I will have to select, am I using agentless or agent-based? So let's say that I'm saying agent-based. Okay. Target region. Now target region, it is not saying कि आपका data center कहाँ पर है. It is saying कि आपको copy कहाँ पर करना है. But it is a trick question or a similar question you can say. If my data center is in India, which is central India, example के लिए, या फिर central India, ठीक है, which is in Mumbai. And if I take Australia or maybe Sweden, तो इंडिया से स्वीडन में डेटा कॉपी होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो मुझको बेयर करना होगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर जहां पर भी आपका फिजिकल लोकेशन है डेटा सेंटर का, उससे नियरेस्ट आप कोई ये लोगे, ठीक है. वंस दिस इज डन, ओके, टारगेट रीजन इज कनाडा ईस्ट. इफ आई हैव सिलेक्टेड कनाडा ईस्ट, इसका मतलब मेरा आसपास कहीं पर होगा. इट विल स्टार्ट क्रिएट रिसोर्स. द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्रिएट रिसोर्स, वो 2-4 एजेंट्स वगैरह क्रिएट कर देगा. देन उसमें से एक आपको डाउनलोड करके फिजिकल इस पे करना पड़ेगा. विल सी दैट व्हेन वी कवर द माइग्रेशन टॉपिक. बट डू यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्या समझने की जरूरत है? वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन द पोर्टल, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. And whatever I am explaining here in these documents, this is good to know information for you. Not this document, these ये documents में सारे steps है आपके, ठीक है. So these are the good to know information. Migration के बाद क्या क्या issues होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर ये कर लिए कि challenge to overcome while migration. Migration होता है कई पर system downtime का planning कैसे करते हैं आप लोग, डिपेंडेंसीज को किस तरह से ये करते हो, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी होने के बाद, माइग्रेशन होने के बाद RDP नहीं हो रहा है, देन व्हाट टू डू, ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू कैन नॉट से दैट मैं माइग्रेशन करके इमीडिएटली सपोर्ट टीम को दे देता था. माइग्रेशन करने के बाद भी एटलीस्ट यू विल ब्रिंग अप द मशीन एंड एवरीथिंग एंड यू विल कीप दोस मशीन्स विथ यू for a week or so. That period is called hypercare period. You will have to mention this, okay, there is a hypercare period. In that hypercare period, if something happens to the migrated machines, we used to troubleshoot. But हाँ, 2 हफ्ते के बाद जो है आप उसको सपोर्ट टीम में दे दोगे. So don't worry, we'll do this everything step by step, then you will understand. Okay. So this was just to answer Amit's question. He wanted to know कि हम लोग क्या क्या करते हैं. So I will cover everything from here, from strategies to migration. We'll migrate the machines as well. Okay, we'll do that. But आप लोगों को ये सब याद करने की जरूरत नहीं. If you can, it's well and good. Why not? I will cover the interview questions also. Literally, this is one of the interview question जो काफी candidates को पूछा गया, including Kumail. Kumail is there on the call. You can ask him. They literally ask a number. Kumail, do you have some question? You have raised your hand. If you have, please ask. Yeah, I think it was not related to this. It's just that those 3 documents which you shared down are regarding assessment, no? The general question. So is it different for different companies? Like, you know, for example, now if you're there in X company, Forget company, and it's different for applications. In okay. my same company, I will have different set of questions for a production application. I'll have different set of question for a testing application. I'll have a different set of question for staging application. In production also, I'll have a different set of questions for a finance application. I'll have a different set of questions for a healthcare application. So it exactly कुछ भी नहीं है. But बेंचमार्क यही रहेगा. इसके आगे एकदम कोई सडनली कुछ हेवाया चेंज नहीं हो जाएगा. If I open this, let me show it to you. If I talk about this one, purpose, आपका फाइनेंस एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, किसी भी तरह को, एप्लीकेशन का पर्पस, एप्लीकेशन नेम, बिजनेस पर्पस, क्रिटिकल कितना है, क्रिटिकलिटी कितनी है, नीड टू नो. इसके बेस पे हम डाउन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं. बिजनेस ओनर, एप्लीकेशन ओनर, इसमें से काफी क्वेश्चंस है जो सेम हो गए, बट कुछ की क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस है जो बिल्कुल चेंज हो गए. That depends on your application's nature, but you don't need to worry about it. I mean, if you are asking Kumil from the architecture point of view, उस preparation के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो, still you don't need to know everything. एक आइडिया होना चाहिए, और उससे बड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के एप्लीकेशन के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे. एग्जांपल के लिए अगर कोई फाइनेंस वाला एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली आप डेटा उसका किस तरह का, डायनेमिक डेटाबेस है, स्टैटिक डेटाबेस है, ये वाले क्वेश्चंस को आप माइंड में रखोगे. बट विल डू दैट जब आपका वो ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, जैसे भी दैट टाइम विल डू इट. हाँ, बट डिफरेंस होता है. ये ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मिल गया और इसको आप हर जगह चिपकाओगे. नहीं, दैट इज नॉट द वे. Okay, yeah, that's what I wanted to ask. Like every company must be having a fixed repository कि Every वैसे saved company, होगा. every team, every application, every scenario will have it differently.
Okay. So this is an interview question, that how many cloud migrations were executed that led to the mastering cloud migration. मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर ये करूँ कि भाई आपने अपने करियर में कितने माइग्रेशन किए. So depending on your experience और आपका number of years का जो कुछ होता है, ये मैंने अपने number of years के हिसाब से लिखा है. That this was for 4+ years. I think this is not for me. कुमेल तुम्हारे लिए ready किया था कि whatever it is for 4+ I think 5 years experience. also. Yeah. Yeah, 4 or 5 years. You can say that I have worked on 15+ migrations and maybe 20+ assessment I have done. It is not like that कि assessment आप करते हो तो migration भी आप ही करते हो. कई बार जो है यहाँ पोर्टल में भी maybe you will come and you will do the assessment and you will leave. आपका कोई project change हो जाएगा, कुछ होगा, because assessment itself takes 30 days, 40 days, 60 days. Assessment अपने आप में बहुत लंबा time चलता है. ठीक है, so when we do it, I'll explain it to you. So So, assessment और migration जो है दो अलग अलग काउंट हो सकते हैं. You can say कि हाँ यार मैंने I think 20 assessment किए और 15 migration किए. This is for someone who wants to show 5-6+ experience. 2 साल का आप बता रहे हो तो आप 10 और 8 के नंबर पे स्टिक रहिए, 4 और 6 के इस पे रहिए. That doesn't matter. Whatever it is, you do your own calculation. Example is given here. The maths is given here. so one more doubt I had. In one of the companies, one recruiter had called, and then he basically asked a lot of preliminary questions like these: how many migrations you have done, and all of that. So what he asked me, can you name a few projects that you worked on? हाँ, So in that I gave random names. मतलब वो fine. तब तो मेरे को याद है. तो उसका कुछ naming convention होता है क्या generally? होता है लेकिन सबका अलग अलग हुआ. So it doesn't matter. और नेमिंग हाँ, मैंने कन्वेंशन उसको होगा बैंक ऑफ भी. अमेरिका दे दिया, एक वैसा कुछ दे दिया, फिर मैंने कुछ अलग और नेमिंग कन्वेंशन होगा भी, तो भी वो नेमिंग कन्वेंशन को आप किसी थर्ड पार्टी इंटरव्यू में थोड़ी ना ये करोगे. नेमिंग कन्वेंशन आपका इंटरनल इसके लिए, राइट? Even if there is a naming convention, while giving an interview to a third party organization, to a separate organization, you're not going to use your actual names. You can obviously say, I'm using dummy names. You can say, okay, I have worked in finance domain, I have worked in healthcare domain, I have worked in media domain, I have worked in insurance domain, और XYZ नाम दे दो. Clients like Bank of America, World Bank, Deloitte, anything, कुछ भी नाम दे दो आप. That depends कि आप current company कितनी बता रहे हो. मतलब current company एक 5 लोगों के company बता रहे हो और उसमें you're claiming that you worked for World Bank, तो वो थोड़ा सा digest नहीं होगा, right? बराबर. So depends कि आपकी current company कितने, उस हिसाब से you don't even have to give name, but yes they can ask. Random name आप दे सकते हो. Okay, so this is one of the question, that how many assessment over the period of time you have done, और किस tools को use करके ये किया है आपने. तो approximately 20 assessment. क्या क्या आप लोगों ने factors consider किए थे. So these are the interview questions जो initial stage पे होते हैं. We will cover them also, right? So let's start with the technical training for today's session. ये सब तो question answer, unless anyone has any question. बस लास्ट ऑफलाइन क्लास कब होगा? No one has replied yet. No, I was also about to ask. When are you planning to take offline classes? Whenever I have the maximum participation, or at least a no from people that they are not coming, so I'll know the exact number. I mean, it should not happen that Kumail is coming to this weekend and then you say you are coming next to next weekend. Amit says I am coming next to next weekend. That is not going to help. So at least required an answer that okay, I'm not coming for the offline classes, so I won't count that candidate. Whoever are coming, so I can plan 1, 2, 3, at least 3 sessions I'm planning, and especially on weekend we'll keep 2 of them, so we can spend at least 3 to 4 hours. Okay. So whenever you guys are ready, let me know. I'll plan accordingly. So fine. if we are on migration topic, that will be good, right? For an offline. हाँ, migration के लिए बोल रहा हूँ मैं. Okay. So meanwhile I get a confirmation. बाकी सब कुछ तो मैं 2-4 छोटे-मोटे टॉपिक्स और पेंडिंग है, लोड बैलेंसर वगैरह. I'll keep covering them. Migration वैसे भी मैं लास्ट में करने वाला. So now this, after this we can straight away go for the migration. मतलब इतना इस यहाँ तक आपको इतनी लर्निंग आ गई है कि माइग्रेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं. But now after this Azure site recovery, I'll stop. I will not go to the migration. I'll go back and जो छोटे-मोटे चीजें छूट गई है, जो जहाँ पर I told you okay I'll cover this, I'll show it to you later. वो सारी चीजें हम कवर करेंगे जितना भी गैप्स हम छोड़कर आए. और 2-4 छोटे-मोटे टॉपिक है. यूजर आइडेंटिटी मैनेज, मतलब एक सेशन के ही टॉपिक है वो. तो I'll finish them. Meanwhile, I hope you guys give me a date or something, some concrete, जहाँ पे something concrete where I can
डिसाइड ऑन समथिंग कि ठीक है इस डे पे हम लोगों को ऑफलाइन सेशन लेना है, and then we'll start migration. Okay guys, so we were discussing about site recovery, disaster recovery or replication, whatever you want to call it. ठीक है, हम लोगों ने क्या करके देख लिया था, we did a test failover. Did we do a failover also? Yes, we did. Okay, so it's good, we did Yeah. a failover also. हाँ, जहाँ पर मशीन हमारी एक्चुअल में Yeah. बंद होगी, so we should have that machine. Let me see, because I did not turn off, because this month we already did not spend much और थोड़ा बैलेंस बचा था, इसलिए मैंने कोई मशीन वगैरह कभी ऑफ नहीं की. I'll still say today I'll be deleting all of these resources. कल से वो new balance. Okay, right. So yes, this is the one. एक new machine बनी है. If you see, when we do a failover, so it shows ASR, right? ये machine off था, by the way. इसको failover करते वक्त ये machine off हो जाती है. ये दोनों machines को मैंने अभी class से पहले start किया, running mode में लेकर आया हूँ. So ASR मतलब ये जो new machine आपकी बनी है वो है. यहाँ से भी आपको सारी services मिल जाएगी, आपकी website वगैरह, everything will work. We tried here, यहाँ पर जाके हम लोगों ने ये देखा था, इसको public IP वगैरह असाइन किया था, and that time the website wasn't working. That because उसके कुछ I think OS level पे जाके उसके ports शायद कुछ issue हो गया था. Migration में, replication में ये सब थोड़ी बहुत चीजें होती है, right? If you saw here, migration में there was a question or post migration issues में मैंने एक ये किया था, and this is commonly known, and if an interviewer is not even asking you, you should tell him. इससे थोड़ा सा ये पता चलता है कि आप लोगों ने काम किया है, कि माइग्रेशन के बाद किस तरह के इश्यूज आते हैं. सो बहुत ही कॉमन इशू है एक माइग्रेशन के बाद, दैट यू आर नॉट एबल टू माइग्रेशन, और कभी कभार रेप्लिकेशन के बाद भी, दैट अनएबल टू टेक आरडीपी पोस्ट माइग्रेशन और पोस्ट disaster recovery. So you don't have to do anything. There's a simple command which is given. By the way, who can tell me if I'm unable to RDP, where will I run this command by then? PowerShell. PowerShell where? Is portal's PowerShell or my machine's PowerShell? Which PowerShell are you talking? Portals. Not literally. This portal, So We can guys, connect to the machine, Connect how? machine's PowerShell. there's an option of run command in the blade. yes, Yes, you it's cannot also connect to the used machine. Let's say, fine. Even what you say is correct, Yogesh. If let's say machine is on and everything is on, it's only RDP. Other than RDP, I'm able to ping to the machine. I'm able to connect to the machine. Then yes, what you are saying, that is also correct. Using PowerShell, I can do the PS session. I can connect to that machine and run it. That is also fine. But let's say that there is an issue कि मेरा IP ही निकल गया है, इसका पब्लिक IP भी नहीं है, प्राइवेट IP भी नहीं है. मशीन इज ऑन फॉर श्योर, आई नो, आई कैन सी इट हियर, बट पब्लिक IP ही नहीं है, या फायरवॉल की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. चलो IP भी है, सब कुछ है, फायरवॉल ऑन रह गया, और नाउ आई एम अनेबल टू लॉग इन टू मशीन. So yes, rightly as Amit said, run command, you will come here and you will run this command. So similarly, यहाँ पर जो हम लोगों ने मशीन ये किया था, up किया था मशीन को, that even if that doesn't work, there are small commands, छोटे मोटे, and you don't even have to remember the command, but you should know किस तरह के issues आते हैं. आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई पूछता है, so you can tell them. आपको मेथड्स पता होने चाहिए. कमांड नहीं याद रहेगा, कोई उस पर ये नहीं करने वाला, मार्कडाउन नहीं करेगा आपको, ठीक है. नो वन रिमेंबर्स, इस तरह के कमांड याद कौन रखेगा, राइट? बट यू शुड नो द मेथड कि हाँ ठीक है, आई विल गो टू दैट मशीन, आई विल सी कि हाँ उस पे आईपी एड्रेस दिख रहा है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आरडीपी. तो आई थिंक आरडीपी मशीन का आरडीपी कई बार जो है ना ऑन नहीं होता है. वेयर डू वी सी द आरडीपी सेटिंग, बाय द वे, एनीवन नोस? आरडीपी डिसेबल इनेबल कहाँ से होता है? Yes guys, anyone? From where can we disable or enable RDP? What setting? We have it's a port, right? A port number. Sorry? So we have to ensure that 3389 is enabled. No, 3389 is enabled. My RDP is disabled. RDP port is a different thing. ठीक है, RDP port तो आप यहीं से कर सकते हो ना, पोर्ट तो यहाँ से कर सकते हो आप, that is fine. Port you can do it from here. मशीन में जाकर मेरा RDP जो है ना वो डिसेबल है. From where can I enable it? That is the question. Anyone, Kumail?
Yogesh bhai, Akib, you guys are working in system admin, you should know. Server manager, we'll go from. Yeah, properties. So Server manager में कहाँ पर? चलो, I'll open server manager. Local server. yeah, remote desktop enabled. Yeah. Right? So if you see, somehow किसी change, किसी reason से अगर ये disable हो जाता है, the moment I click OK, ये disconnect हो जाएगा and I won't be able to take remote to this machine. If you want to create a machine, try this. किस तरह से work करता है? उसको आप RDP लो, यहाँ पर आके उसको disconnect कर दो, and then see you will get disconnected automatically and you will not be able to log in. And how to log in? You can enable the same setting which I did using GUI. You can do the same setting using command line. So same thing, come here, go to that command prompt और वहां पे एक command run को run कर दीजिए जिससे आपका RDP enable हो जाएगा. So this approach you should know. Even if you don't remember the command के RDP को enable करने के लिए क्या है, interviewer is not going to mark you down. Is it clear? Yeah. Okay. So I was talking about, so this is clear to you, right? Failover किस तरह से होता है, सब कुछ कैसा होता है. Now let's see. हाँ, एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर के फेल ओवर होने के बाद क्या होगा. One question, guys. Now I failed over one machine here. I mean, I have already shown the answer to you. Let's see how many of you got it. This is the machine जिसको मैंने fail over कर दिया, right? ये machine up हो गई. It is up and running. सब कुछ है. Now what is the status of synchronization? What do you think? Did you get my question? If anyone did not get, ask me, I'll explain it again. Yeah, could you explain again? What is the status of, like this is my machine where I performed a test failover, right? Tsoft is the machine where I performed my test failover. Now if I go to the machine and check disaster recovery, I'm talking about the Tsoft machine where we performed test failover. And if I go to Tsoft, I can see I have deleted the test failover and my synchronization is in healthy status. What is it? Healthy. Okay. Everything is working fine. Retention मेरा जो synchronization अभी भी चल रहा है. Is it clear to you guys? Yeah. Okay. Now the question is, what do you think the status would be for this machine where I performed failover, not a test failover. I actually performed a failover. So if I go here, what would be the status? It will not be synchronizing. Sorry. According to me, it will not be synchronizing. Okay. So what is? Will it be stopped or what should be the condition? So we have to again go ahead and resynchronize because it is failed over to another region. So What about others? What do you think? It should इसके be healthy. whatever it is, correct, incorrect, जो भी आप लोगों को लगता है. It should be healthy. I've protected. Okay, let's go and check. If I go to disaster recovery, I will get an option failover completed. And because I have not committed yet, Kumel, you were Yes, correct, but commit. only one thing was pending to commit. If you remember, session हमारा Yeah. खत्म हो गया था. But Kumel is correct technically. If I would have committed, ठीक है, ये सब मैं कर लेता, तो then see what will happen. अब थोड़ी देर के बाद अब जब आकर देखोगे आप, तो यहाँ पर किसी तरह का कुछ ये नहीं होगा. वैसे अभी भी स्टॉप हो चुका है ना. इफ यू सी आरपीओ वगैरह कुछ नहीं होगा. सिंक्रोनाइजेशन स्टॉप हो चुका है. द ओनली थिंग वी हैड टू डू इज कमिट को ये करना था, राइट, एंड व्हिच वी हैव डन नाउ. बट वेयर इज आवर मशीन नाउ? वेयर इज आवर एक्चुअल मशीन? अब इस मशीन के साथ तो कुछ भी हो जाए, इसका चालू है या नहीं है डजंट मैटर. ठीक है, कल सपोज मेरे कल कोई ये हुआ था, डिजास्टर हुआ था, एंड यस्टरडे ओनली आई परफॉर्म दिस फेल ओवर. तो कल से कौन से मशीन से यूज कर रहे हैं यूजर्स? फ्रॉम यस्टरडे व्हिच मशीन इज बीइंग यूज्ड बाय माय यूजर्स?
yes, ACR वाली, right? So now किस मशीन के बारे में I should be worried? क्योंकि एक दिन का डेटा मेरा एक्स्ट्रा किस में है, इसमें है या ASR वाले में है? ASR. ASR. So what do you think? ASR पे ऑटोमेटिक ये है यहाँ पर DR? No. It is not there. You have to re-protect. Yes, you will have to re-protect. So if you click re-protect, now it is showing अब ये कहां से होगा, ये ऑपोजिट होगा, पहले जैसा था जैसे हमारा बेसिक जो था नॉर्थ यूरोप था. इफ यू स्टिल हैव सम कंफ्यूजन, सी एक्चुअल मशीन जो है हमारी वो नॉर्थ यूरोप में थी. आई ओपन दोस मशीन्स अगेन. नॉर्थ यूरोप से हमने वेस्ट यूएस में ये कर लिया, राइट? नाउ इट इज फ्रॉम वेस्ट यूएस टू नॉर्थ यूरोप. आर यू गाइस गेटिंग इट? एनी कंफ्यूजन? आई मीन इट्स वेरी सिंपल थिंग. व्हेन आई डू द री-प्रोटेक्ट, तो मेरे एक्चुअल मशीन कौन सी बन गई है अब? ASR बन गया actually. राइट. Guys, can you hear me? Yes. sir. This is about to finish. If this finishes, we will start with the same link without any break. So let's say I'm just getting some images here so I can explain it to you. This is my Azure VM 001, which was in North Europe. Okay. इसको मैंने ये कर दिया था यहाँ पर replication to West US. Then I performed a failover. Failover perform करने के बाद क्या हो जाता है, ये मशीन शट डाउन हो जाती है, राइट? आई होप यू रिमेम्बर दिस. दिस मशीन शट्स डाउन. ये मशीन मेरा एक्चुअल मशीन बन गया, ठीक है? नाउ दिस इज माय एक्चुअल मशीन. ऑल माय यूजर्स टिल यस्टरडे हु आर कनेक्टिंग हियर, नाउ दे आर कनेक्टिंग हियर. तो मेरा अप टू डेट डेटा किस में है? वेस्ट यूएस वाले में. वेस्ट यूएस में. नाउ इफ आई क्लिक ऑन री-प्रोटेक्ट, it does not mean कि वो इसी मशीन से कुछ लेना देना है उसका. Now this machine is gone, it's isolated, you can delete it, do whatever you want. इस मशीन में कुछ नहीं करेगा. हाँ, बट री-प्रोटेक्ट भी कैसे करेगा वो? अब यहाँ से यहाँ पर जाएगा, वेस्ट यूएस से नॉर्थ यूरोप. Is it clear? Did you guys understand? Yes. If I click OK, it will start synchronization. And if I want to disable replication, I can simply disable replication from here. Okay, we'll do that. We'll see the disable and deleting, वो सब हम देखते हैं. And how to do that we'll see. 1 minute बाकी. Anyone has any question? So we'll do after enabling the re-protect. जब हम फिर से ये करते हैं fail back, तो वो जो मशीन का नाम होगा सेम होगा या? सॉरी, किस मशीन पे? जब हम फिर से वही रीजन पे, जैसे नॉर्थ यूरोप पे जब करते हैं. हाँ, सेम होगा ना. इसका भी तो नाम सेम ही है जो फेल ओवर कर रखा है ना आपने मशीन. जो तो मशीन ASR आपने ही होगा. नहीं, ASR जैसे अब नहीं अभी wait, ASR दिखाया. नहीं, there is no ASR. ASR is just in the name of resource group to identify. Machine doesn't have ASR. You see, this is the machine. Machine doesn't have ASR. Okay guys, we'll start using the same link without any break.